it was a flu, I think, because the symptoms were very much the same. The weather is changing, and it often happens when the weather changes. Good evening, My sir. mistake. Hey, Rukaiya. I always do something silly. The other day, I ate papaya from the fridge early morning. It was Wow. very cold. And the same day, I think the next day or the same day, I think, uh, yeah, the next day I had to go to Rajgir for my daughter's exam on Monday. And I was And coming you back fell sick. without a jacket on. Bike. Yes. And in this kind of weather, you need to be extra careful. People start to think that winter is gone, and this is exactly what happened with me. No, not this. So I stayed away from teaching for 2 days. One day it was a festival actually. Yeah, Which Monday was festival? a festival, Shabe Barat. Yes, sir. Oh, So that was a day off for a good reason, but Tuesday was just because of my sickness. And something terrible happened in Khagzi Mohalla, I think. A couple of guys had a bad accident. Two of them died on the when, sir? way on the way to Bihar Sharif. It happened, I think, on Monday. Yeah, Monday itself, I On think. Sunday night. On Sunday night. Night. Oh, Three of them are sick. I mean, seriously injured, I think, and two of them have succumbed to their injuries. They were Mahalpur boys, sir, I think. They were Mahalpur boys. Okay, sorry. Okay, Yes, sir. yeah. Hmm. I got to know about it on Facebook, and it was tragic. The 4-lane road is safe. I traveled. Second time I went with my daughter, and I was talking about it. But unless a young car driver, is driving recklessly, there are very few chances of accidents because you've got such a wide road for one-way traffic. You're going in one direction. So why would you touch each other? Okay, it's highly unlikely. Only when a car driver who's young and reckless, they can do it. They can touch you when they are trying to, overtake you. Okay, so let's start. I was expecting more people, of course. Hope they will join us. and I'm sorry to inform that I will also drop off in some of minutes because I have a In meeting at 30, sir. Okay, okay. Of course, work first, Mhm. So Imrana is here. What are we studying? You need to remind me. Unit 9, we have started. There was no homework actually. Oh, okay. Just a few things. You had to just put these sentences, these lines in those blank Good evening, sir. places. Hello, Imrana Beta. How are you? Yes, sir. So let's check this quickly. The homework that we had yesterday is here as well. Now, you guys will tell me where these lines will go. 9.2. Or maybe because I would like to speak less, save my energy. So I'll play the audio file directly. 9.2. Let me know if you have any questions, confusions. 9.2. The story of Mula and the miserable man.
A wise old man called Mullah was walking along the road through the woods when he saw a man walking towards him. The man was carrying a dirty old sack. He looked very unhappy, and when Mullah asked him why, the man told him his story. The man told him his story. He was all alone because his He was all alone because his wife had left him. wife had left him, and he was also poor and homeless because he had lost his job and He was poor and homeless. Let's close the door. He was poor and homeless because he had left his job. Because he had left his job. Okay. his house. Everything I own is in this. He had left his job and so he had lost his job and his house. Okay. Good. Old sack, he said. My life is miserable. And he walked off. After the man had gone a few yards, After the man had gone a few yards, after the man had gone, the miserable man, the man with the old sack, had gone a few yards. After the man had gone a few yards, Mullah ran past him. Mullah ran past him. After the man had gone a few yards, Mullah ran past him. Took his sack and ran into the woods. The man was afraid to follow. The man was afraid to follow because He had he had heard heard it was it was easy to get lost in these woods. He had heard it was easy to get lost in these woods. So he did not go after Mullah. He had heard it was easy to get lost in these woods. Now my life is even more miserable, he said, and he sat down and cried. Meanwhile, further down the road, Mullah came out of the woods and put the man's sack in the middle of the road. Right. Just give me a second. Nothing. They're young kids. They are always noisy. Finally, when he had stopped crying, the man set off again. Finally, when he had stopped crying, he had stopped crying, the man set off again. Walking slowly and sadly. Suddenly, he saw his sack. My sack! He shouted. He picked it up. Everything was still inside it. He was overjoyed and walked happily on towards the city, singing as he went. Well, said Mullah, that's one way to make someone happy. The moral of the story is, appreciate what you have, however little. Grammar spot. The blue box. What tense are the verbs in bold, everybody? I'll be right back again. Could you be a little quieter, please? Yes. Okay, the man was carrying a sack. What tense do you Past, see here? past continuous. Everybody? No confusion at all. No confusion at all, I hope. The man was carrying a sack. He told Mullah, what tense do you think this is? Past simple. Definite. He told Mullah his story. He had lost his job. Past
perfect. Perfect. Because it looks like Past present perfect, perfect he or had not. lost. Similar. In the present perfect, we say has lost, have lost, and here we are saying had lost. So obviously it is the past perfect. So past continuous looks like the present continuous, is carrying, are carrying, was carrying past. He tells present simple. He has lost present perfect. He had lost past perfect. So there is a very striking similarity. There is a big similarity between the tenses, the past and the present. I would like to take you guys to the whiteboard for a few minutes and explain this to you. Present and past. Okay, so let's see. Going. Go ahead and come help me complete it. I was going. I was going. And I don't want to say gone. I want to say I have given. Okay. I have given. Past perfect. I had given. Okay. I had So given. if you notice, going, going, given, given. The change is here. Okay. And here. So the form should be very, very easy for you now. There should be zero confusion with the form at least. Right? Good evening. Yes, sir. When it comes to speaking, there is a confusion. While writing, Uh-huh. I don't have, I think I don't have any confusion. So maybe today we'll talk about the uses. If you feel confused while speaking, it means you feel confused about the uses, not about the form. There are two things. One, identification. That's about form. Can you identify the tenses? Yes, you can easily identify them. I go is the present simple. I went is the past simple. I am going is the present continuous. I was going is the past continuous. I have given Past is the continuous. present perfect. And I Correct. had Present given is perfect. the past perfect. Past So perfect. forms are easy. Uses. We are going to learn the uses of the past Yes. perfect. Past perfect is very different. And you guys need to learn it. Of course, because when I was at school, I thought I knew the past perfect. My teachers taught me chuka tha, chuki thi, cup tha, pyala tha, all these things are past perfect. But later I learned that's not how it works. Hindi cannot help you with the, especially English. the past perfect, especially with the past perfect. Hindi will not help you. Past perfect in English is unique, it's different. It's not what you think here. You always feel confused about the past perfect if you are studying it with the help of people say, मैं वो फिल्म देख चुका था, मैं वो फिल्म देख चुका था, तो ठीक है, आसान हो गया. I had seen the film. लेकिन सारी हिंदी ऐसी नहीं होगी. सारी हिंदी ऐसी नहीं होगी. कई बार हिंदी कंफ्यूजिंग होगी, तो हिंदी से नहीं जाओगे. Let's understand the past perfect. Okay, this is the timeline.
And I'm glad that you guys are here. All of you are here now. Those who are absent, they will watch the recording later and learn. This is the timeline. And let's use dots here to suggest. Yes, please. Sure. To suggest that this we do not know, it is future. We are here, Yeah. be present. Okay. And this is going to be the future. And this is the Future. past. It has already gone by. Okay, Happened. the time. Yeah. So guys, that man with the old sack was miserable. He was sad. He was all alone. He was all alone. He was Yeah. alone. And why was he alone? Because his wife had left him. Had left him. Left him. ये देखा मेरा डायरेक्शन किधर गया बेटा? ये देखा मेरा डायरेक्शन किधर गया? Okay. Okay, he was homeless. He was homeless. यहाँ देखते हैं. He was homeless. He was homeless. ऐसे ही बोल रहे हैं. इसका कोई चीज से पहले वाली बोलने से कोई बात लेना देना नहीं. इससे कोई लेना देना नहीं. Independent. He was homeless. He was homeless. क्यों भाई? Why was he homeless? Because he had lost his. He had lost his job and his house. तो आप देख रहे हो हैड करते जब हम बोलते हैं पास्ट परफेक्ट तो किस डायरेक्शन में जाते हैं? पास्ट के पास्ट में जाते हैं, कह सकते हैं सर? Yeah. Was homeless पास्ट तो है ही, ये तो Yeah. पास्ट है ही हमारे लिए. He was homeless, he was alone, और उसके भी पास्ट में जाते हैं और ऐसे चले जाते हैं. तो पास्ट परफेक्ट इज द पास्ट ऑफ पास्ट सिंपल. पास्ट ऑफ पास्ट इज पास्ट परफेक्ट. Yeah. Past of past. Yeah. तो जब तक हमें ये नहीं मिलेगा रेफरेंस, ये हो सकता है क्या? No. नहीं, क्योंकि पास्ट के पास्ट में जाने के लिए तभी पास्ट परफेक्ट बनता है. तो पास्ट चाहिए उस तब ना पास्ट के पास्ट में जाएंगे. पास्ट भी मिला ही नहीं अगर हमें, तो डायरेक्ट पास्ट परफेक्ट कहां से मिल जाएगा? तो पास्ट के पास्ट को पास्ट परफेक्ट कहते हैं. और सिंपल एंड इजी. इससे कोई लेना देना नहीं है कब क्या. बस खाली यह ध्यान रखना है कि पास्ट के पास्ट में होना चाहिए वो. यानी पहले पास्ट डिटरमिन करो, फिर उसके पास्ट में जाओ. हम घर गए. आई रीच्ड होम. अभी हम यहाँ है प्रेजेंट, अभी बोल रहे हैं हम अभी. तो हम घर लौटे. आई केम बैक होम. ये पहले हमारा अभी से प्रेजेंट से पास्ट मिला, राइट? प्रेजेंट से पास्ट, इसीलिए मैंने कहा आई केम बैक होम. घर आए हम वापस. तो मेरे कुछ रिलेटिव्स घर आए हुए थे. अब बताओ वो घर कब आए? मैं यहां घर आया तो उसके पहले इधर ही आए थे ना वो, राइट? माई रिलेटिव्स हैड अराइव्ड. सम ऑफ माई रिलेटिव्स हैड अराइव्ड. एक बार खाली मेरा कॉन्सेप्ट समझ जाना, पास्ट का पास्ट कैसे देखते हैं, एंड थिंग्स विल बी इजी. Okay, so I am here right now. This is me, present, right? मैंने कहा कल जब मैं उठा. When I woke up. When I woke up. When I woke up. When I woke up. When I woke up yesterday. तो मान लो वो टाइम यहाँ रख लो, यहाँ रख लो, कहीं भी रख लो. ये अभी मैं यहाँ हूँ, राइट? दिस इज माई प्रेजेंट मोमेंट. मैं कल जब उठा. व्हेन आई वोक अप. मैं चाहूं तो यहाँ मान लू, मैं चाहूं तो यहाँ मान लू, मैं चाहूं तो यहाँ मान लू, जहाँ मेरी मर्जी. मैं कल जब उठा. व्हेन आई वोक अप यस्टरडे.
आई नोटिस्ड, आई, अच्छा बताओ, नोटिस्ड बोलो कि हैड नोटिस्ड बोलो? क्या बोलूं दोस्तों? आई नोटिस्ड बोलो कि आई हैड नोटिस्ड बोलो? आप लोग सब बोलेंगे आई हैड नोटिस्ड। पता है क्यों बोलेंगे आप आई हैड नोटिस्ड? नहीं सर, आई नोटिस्ड, आई विल से। Thank you, Nikhil I beta. noticed. Sorry, Nikhil. You're not that young that I can call you beta. Yeah, Okay, no the rest. problem. Yeah. So I'm saying that no, आप लोग हैड नोटिस इसलिए बोल रहे हो बिकॉज आप पढ़ रहे थे तो आपको लगा यही तो पढ़ा रहे होंगे। आप अपना दिमाग को ट्रस्ट नहीं कर रहे। आप आप गैम्बलिंग कर रहे हो अभी फिलहाल, सीखना नहीं कर रहे हो आप। सीखने में मैंने क्या बोला था कि जब हम कोई भी, मान लो हम ये व्हेन आई वोक अप यस्टरडे मेरा बी है मान लो, तो मैंने नोटिस इधर किया या इधर किया नोटिस? After that we जागने के बाद noticed, किया? so it is जागने not के बाद past of. नोटिस किया ना? तो नोटिस करने का काम Yeah, बी present. के ए तरफ डायरेक्शन में हुआ कि सी के डायरेक्शन में हुआ था नोटिस करने का काम? तो फिर एक ही काहे आई डायरेक्शन हैड में. नोटिस काहे बोले तुम सब? काहे बोले I तुम लोग? didn't say anything. हाँ, जो भी लोग हैड नोटिस्ड बोले उनसे पूछ रहा हूँ। तो तुम गैम्बलिंग बंद करो करना और सीखना शुरू करो। गैम्बलिंग होता है कि भाई अभी तो हैड नोटिस पढ़ा रहे, यही हो रहा होगा। इसको कहते हैं बेट लेना, चांस लेना कि चलो लिखते हैं Yeah, यही सही but होगा। बट यू गाइस शुड अंडरस्टैंड दैट व्हाट आई हैव टॉट सो फार, पास्ट के पास्ट में इधर मैंने कब किया? पास्ट के पास हम तो पास्ट से प्रेजेंट की तरफ आ रहे हैं। आई नोटिस्ड फंसा yeah, दिया मैंने शुरू yes. में। ओके, अच्छा लगा फंसना? It's a little ये तो tricky दिमाग also. खुल गया ना कि किधर नहीं जाने का, पास्ट परफेक्ट में किधर Yeah, नहीं जाने का, समझ आ गया ना? प्रेजेंट की तरफ जा रहे तो पास्ट परफेक्ट नहीं हो सकता, पास्ट के पास्ट में जाना होगा। yeah, we have तो to. आई नोटिस कि आई हैड नोटिस्ड, आई I नोटिस्ड, noticed. आई क्या नोटिस किया मैंने कि किसी ने somebody broke into our house, broke into our house, या somebody had broken into our house? Somebody had broken into our house. बोलो। ब्रेक इनटू मतलब समझते ना? आप सोए हुए हैं, कोई Yeah, घुस गया घर में, ओके, कुछ चुरा उरा लिया, ओके, तो बताओ somebody broke into our house or somebody had broken into our house? I Somebody noticed had somebody had broken somebody into had a. broken into our house. हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? फिर से वही जवाब आएगा। हम यहाँ जागे, बी में हम जागे, बी Yeah, पॉइंट है जागने का, बी से थोड़ा सा ए की तरफ आए तो हमने नोटिस किया। लेकिन जो नोटिस uh, किया कि कोई घर में घुसा था, वो काम उठने के पहले ही हो गया था ना, वेकअप करने के पहले ही हो yeah. गया था ना। We have to में go गए, back to the sea. somebody had broken broken into our house, somebody had broken into Yeah, our house, कोई हमारे घर में घुसा था। बोलेंगे कोई घर में घुस चुका था, ऐसा बोलेंगे exactly. यहाँ पे हिंदी में? बोल पाएंगे? इसलिए नहीं. मैंने कहा हिंदी विल नॉट हेल्प यू। जो चुका था, चुकी थी, कप था, प्याला था, कटोरी थी, सब साइड करो, ठीक है? सारा बर्तन बेकार है, इंग्लिश को ध्यान दो। ये जो सीधा सीधा टाइमलाइन डिसाइड किया है। I didn't know this. Okay, I had never studied this way until a long time later, much later. When I was at school, when I was college, college student, I always studied वही वाला, चुका था, चुकी थी, because और कुछ बताने वाला था ही नहीं। Only when I got these monolingual books आई ना मेरे सामने, तो मेरी सोचने का नजरिया ही बदल गया। क्यों? बिकॉज उसमें हिंदी होती नहीं थी, तो मैं समझता किस चीज से? तो वो ऐसे ऐसे तरीके यूज करते थे समझाने के लिए। And then I thought, wow, this helped me a lot. तो अगर मैं बोलूं कि मेरी साइकिल खराब हो गई थी, तो इसके दो ट्रांसलेशंस होंगे, एक पास्ट सिंपल में और एक पास्ट परफेक्ट में। यही एक हिंदी की दो ट्रांसलेशंस होंगे। मेरी कार खराब हो गई थी, ठीक है, तो इसके दो ट्रांसलेशंस होंगे, एक पास्ट सिंपल में, एक पास्ट परफेक्ट में। कैसे समझाऊं आपको? आपका दिमाग क्या कह रहा है कि क्यों होगा दो? सीधी सी बात है। अगर कोई स्थिति अभी है, इसके पास्ट में जाके बताना है कार खराब हो गई थी, तो पास्ट सिंपल। लेकिन पास्ट की कोई स्थिति है, उसके पीछे जाके बताना था कार खराब हो गई, तो पास्ट परफेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, प्रैक्टिकल बनाता हूँ। आप आए क्लास, लेट आए, मैंने पूछा क्यों लेट हो जी? सर बाइकवा खराब हो गया था रास्ता में। माई क्वेश्चन इज, व्हाई आर यू लेट?
Why are you late? You are late right now. तो why are you late today? आप आए अंदर क्लास में, मैंने पूछा why are you late? तो आपका जवाब है सर बाइक खराब हो गया था. My bike broke down. My bike Broke broke down. down. मेरे बाइक खराब हो गया था. पास्ट सिंपल, क्योंकि अभी लेट हैं, अभी के पीछे जाएंगे तो क्या दिखेगा? पास्ट सिंपल. पास्ट की कोई बात बताने के लिए कौन सा टेंस? पास्ट सिंपल. लेकिन अगर मैंने उस समय नहीं सवाल जवाब किया, देखा क्लास डिस्टर्ब हो जाएगा, ठीक है, क्लास खत्म हो गया, फिर मैंने पूछा, क्लास खत्म होने के बाद क्या पूछेंगे आप गाइस? Why were you late today? अब नहीं पूछेंगे why are you late today? Class is over. Yeah. अब क्या पूछेंगे दोस्तों? Why Why were were you you late? late today? अब लड़का क्या जवाब देगा बच्चा हमको? Yeah, I had an accident. क्यों लेट क्यों आए थे भाई आज? सर बाइकवा खराब हो गया था. आया समझ में? तो इट्स नॉट द हिंदी, इट्स द सिचुएशन, द कॉन्टेक्स्ट. पास्ट के पास में जा रहे हो कि प्रेजेंट के पास में जा रहे हो? पास्ट के पास में जाओगे, Past. पास्ट. Yeah. प्रेजेंट के पास में जाओगे, पास्ट सिंपल, नॉट पास्ट परफेक्ट. तो कुछ लोग यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं, वो प्रेजेंट के पास्ट में पास्ट परफेक्ट यूज कर लेते हैं. पास्ट परफेक्ट मींस पास्ट का पास्ट, नॉट का पास्ट. आई एम नॉट वेरी वेल टुडे, यू नो. सर, तो Yes. बिना टाइम रेफरेंस के तो पास्ट परफेक्ट होना ही नहीं चाहिए फिर. यस जैसे निखिल, मैं खा यस. चुका था, मैं खा चुकी थी, सब तो गलत है एक तरह से देखा जाए तो. नहीं नहीं नहीं, मैं आपको समझा देता हूं. कई बार हम्म. क्या होता है कि आपने कोई सेंटेंस कहीं से उठा लिया है कॉन्टेक्स्ट से, और सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा है कि कॉन्टेक्स्ट आप इमेजिन कर सकते हैं. जैसे चुका था, जब आप बोलते हैं तो आपको इमेजिन हो जाता है कि कहाँ बोला गया होगा. आप इमेजिन कर सकते हो कहाँ बोला. मैं एक एग्जांपल देता हूँ. तुम्हें सच बोल देना चाहिए था. तो ये काम बिगड़ने के बाद सलाह दिया जा रहा है या काम बिगड़ने से पहले सलाह दिया जा रहा है? क्या लग रहा है आपको? बिगड़ने कैसे के आपको बाद. पता बिगड़ने चल के जाता है बाद. ये? कैसे पता चल जाता है? शब्दों के अरेंजमेंट से. अगर मैं बोलूं कि Yeah. आपको सच बोल देना चाहिए, तो अभी काम बिगड़ा है क्या? नहीं. हो सकता है सच नहीं. बोल देने से आप बच जाए, राइट. लेकिन आपको हम्म. सच बोल देना चाहिए था, सुनने से आपका कॉन्टेक्स्ट क्लियर हो जाता है ना. तो कई बार हिंदी ऐसी होती है, क्लियर हिंदी होती है, इसमें एम्बिग्यूइटी नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है. जैसे निखिल ने कहा, क्या था निखिल? हिंदी? मैं खा चुका था. मैं खा चुका था. अब बोलो कहाँ बोलेंगे? पापा जब घर लेके आए चिकन बिरयानी, तो हम और खाना खा चुके खा थे. चुके थे. देखो, पापा घर लेके आए बिरयानी, पास सिंपल हो गया ना. और आप खाना खा चुके थे, Yeah. उसके पहले हुआ ना, तो मैच कर गया ना Yeah. कॉन्टेक्स्ट. तो आप ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. तो इसलिए चुके थे में आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है. लेकिन सारी हिंदी आपकी वैसे होती नहीं है ना. जब आप बोलने जाते हो इंग्लिश, तो आपके मुंह पे चुके थे वाला सेंटेंस नहीं आते हमेशा. आप इसी स्टोरी में देखना कहाँ कहाँ चुका था आएगा, देखना हिंदी करके. टुडे इन द मॉर्निंग when I asked my students to translate an English sentence into Hindi, the sentence was, sometimes he stayed at the gaming table 24/7. Sometimes he stayed at the gaming table 24/7. Okay, 24 hours. खाली ऐसे बोलते हैं 24 hours. Okay. Sometimes he stayed at the gaming table 24 hours, not 24/7. Okay. Sometimes he stayed at the gaming table 24 hours. He was hungry, but he didn't want to stop gambling. He was hungry, but he didn't want to stop gambling. उसी पूरे बातचीत को चलाते चलो. क्या he was hungry की हिंदी क्या होनी चाहिए यहाँ पे? भूखा तो नहीं हो सकता. भूखा था किसी एक मोमेंट का रेफरेंस है. वह भूखा था स्पेसिफिक ओकेजन है, मल्टीपल ओकेजन, रेकरेंस नहीं है, रेपिटेशन नहीं है. वह भूखा था. वह भूखा था बोलने से रेपिटेशन का फीलिंग आता है क्या हिंदी में? लेकिन नहीं. यहां जो बोला जा रहा है इसमें क्या है? रेपिटेशन है कि एक बार हुआ ये चीज. सुनो, समटाइम्स ही स्टेड एट द गेमिंग टेबल 24 hours. कभी कभी वो गेमिंग टेबल पे 24 घंटे रहता था. He was hungry, but he didn't want to stop gambling. अब बोलेंगे वो भूखा था कि उसको भूख लगती रहती थी, लेकिन फिर भी या खेलते भूख रहता लगती था. रहती थी. रेपिटेशन वाला है ना. हाँ. तो ये हिंदी कैसे करी तुमने? यहाँ हिंदी ये नहीं होनी चाहिए थी. हाँ, जो भी आप बोले वो फिर भी खेलता रहता था. He didn't want to stop gambling.
तो क्या ये एक बार का मौका था? तो आपने एक बार वाली हिंदी कैसे करी बच्चे? फीलिंग नहीं आई आपको। फीलिंग लाना जरूरी है ना, राइट? तो आप जो हिंदी इंग्लिश पढ़ते हैं, अगर आप उसको बिना फीलिंग के सीखते हैं तो ऐसी गलतियां होती रह जाएंगी। ट्राई टू फील, ओके? ऊपर से मैंने शुरू किया था, वो समटाइम्स वाला सेंटेंस मैं नहीं देता तो आपकी गलती नहीं होती, बट आई गेव दैट सेंटेंस टू प्रिपेयर यू। आपने उसको इग्नोर किया। जिसने भी ही वॉज हंग्री की हिंदी क्या की, वो भूखा था, उसने पिछले सेंटेंस को क्या कर दिया, पूरी तरह से इग्नोर। बिकॉज माई सेंटेंस वॉज समटाइम्स ही स्टेड एट द गेमिंग टेबल 24 आवर्स। कभी कभी 24 घंटे बैठा रहता था गेमिंग टेबल पे। तो आगे क्या आएगा? वो भूखा था कि उसको भूख लगती रहती थी? उसको भूख लगा होता था। भूख उसको लगती भूख, बिहारी या बोलते हैं, बिहारी हम लगा। लोग बोल लेते हैं बिहारी में, उसको भूख लगा होता था, फिर भी खेलते रहता था, रुकता नहीं था खेलना। तो आप ऐसे काहे बोल गए? पता है, पीछे वाले सेंटेंस को एक्नॉलेज नहीं किया, कॉन्टेक्स्ट को एक्नॉलेज नहीं किया। इतना पावरफुल है ना रट्टा मार पढ़ाई बचपन वाला, कौन वाला, ही वॉज हंग्री। ये सबसे ज्यादा परेशान करता है लोगों को। मैं आपको बताता हूँ, ठीक है? मैं इसको एलिमेंट्री में 3-4 जगह पढ़ाता हूँ। When I get up on Saturday, I am very hungry. I am very hungry. When I get up on Saturday morning, I am very hungry. जरा इसकी हिंदी करें, राइट? लेकिन फिर बच्चे वहां पर क्या बोलते हैं, मैं बहुत भूखा हूं, आई एम वेरी हंग्री, क्योंकि उनको बचपन से बात रटवा दिया गया है। आप घर आते हो तो क्या बोलते हैं, मम्मी मैं भूखा हूं, भूख लगी है बोलते हैं। तो वो हिंदी दिमाग में आना चाहिए जब आप बोलेंगे आई एम हंग्री। लेकिन बचपन में रटाया क्या है, आई मतलब मैं, एम मतलब हूँ, हंग्री मतलब भूखा। लगा दो, अरेंज कर दो, बिना दिमाग इमोशंस यूज किए हुए। आई एम हंग्री, मैं भूखा हूँ, नहीं। आप अपनी मम्मी को कभी नहीं बोले हैं, जिंदगी में कभी नहीं बोले हैं मैं भूखा हूँ। आप हमेशा क्या बोले हैं, मम्मी बहुत जोर से भूख लगा है मम्मी, राइट? और उसी को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, आई एम वेरी हंग्री मम्मी। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो बेटा ये ध्यान रखना है कि हमें कॉन्टेक्स्ट को कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। और पास्ट परफेक्ट पूरी तरह से कॉन्टेक्स्ट कॉन्टेक्स्ट पे बेस्ड ट्रांसलेशन है, ठीक है? और आपके निखिल, आपके कंफ्यूजन का जवाब मिल गया? वो आपने चुप चुपका था बोला था, तो मैंने कहा कि वो कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर देता है, वो हाँ एकदम एम्बिग्यूटी है ही नहीं वहां पे, इसलिए कोई हाँ हाँ परेशानी हाँ। नहीं हो। यस सर, आई गॉट द आंसर, बट ये इसका हिंदी क्या हुआ सर, ये सुनाई नहीं दिया। व्हेन आई वोक इसका अप ऑन सैटरडे आई एम वेरी हंग्री। व्हेन आई वोक अप नहीं बोल सकते हैं, व्हेन आई वेक वही अप तो, ऑन क्योंकि सैटरडे। वहाँ आई बाज हो जाएगा, व्हेन आई वेक अप। हाँ, आई एम वेरी ओके। हंग्री। और अगर मैंने कहा व्हेन आई वोक अप आई वॉज वेरी हंग्री, तो इसके हंग्री। दो हिंदी होंगे। ध्यान रखना दोस्तों, प्रेजेंट में तो एक ही हिंदी होगी। व्हेन आई वेक अप ऑन सैटरडे मॉर्निंग, व्हेन आई वेक अप ऑन सैटरडे मॉर्निंग सैटरडे आई मॉर्निंग। एम वेरी हंग्री। जब मैं हम्म। सैटरडे की सुबह उठता हूं तो मुझे बड़ी जोर की भूख लगी बहुत होती है। नो हम्म। अदर ऑप्शन, वी हैव टू से दिस वे। लेकिन पास्ट करोगे ना, When I woke up on Saturday morning, I was very hungry. तो दो ऑप्शंस हैं हिंदी में। एक, आप अपनी रिपीटिशन वाली आदत बता सकते हो कि बार बार होता था, ये भी ऐसे ही बोल सकते हैं। और एक बार वाला भी बोल सकते हैं, कॉन्टेक्स्ट बता देगा आपको। इस सेंटेंस की हिंदी दो तरीके से, बिना कॉन्टेक्स्ट के दो ट्रांसलेशंस हैं। एक, जब मैं शनिवार को उठा तो मुझे भूख लगी थी, यानी एक स्पेशल ओकेजन, राइट? और दूसरा, जब मैं शनिवार को उठता था तो मुझे बड़ी भूख लगी होती थी। तो ये दोनों ही हिंदी के लिए एक ट्रांसलेशन है आपके पास, कोई टेंशन नहीं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि पास्ट सिंपल के दो हिंदी होते हैं, आप जानते हो। आई वेंट, मैं गया, और मैं जाता था। ठीक है, दोनों ही ट्रांसलेशंस परफेक्ट ट्रांसलेशंस हैं, कोई परेशानी नहीं है। I went to school at 8 o'clock and I came back at 2 o'clock in the afternoon. But in the summer season, I went to school at 6 in the morning and came back at 12. अभी बताओ कौन से हिंदी करना सही होगा इसमें? जाते थे, ठीक है, ठीक है,
क्योंकि आई वेंट टू मैंने कहा था, ठीक है, तो हम जाते थे, यहाँ गए नहीं बोलेंगे ना, क्योंकि इन समर डालने से क्या हो गया, रिपीटिशन वाली बात आ गई ना, राइट। और जैसे ही मैं इन समर हटा दूं तो आप पे एम्बिग्यूटी आप पे छूट गया कि आप जैसे चाहे इसको ले सकते हैं। तो हम लोग इसीलिए बिना कॉन्टेक्स्ट के नहीं पढ़ाते, कॉन्टेक्स्ट तैयार रखो ताकि आप पीछे से समझते हुए आओ अभी क्या बोला जाना चाहिए। When you don't have a context, the decision will fall upon you. Okay, you will have to decide what you have to say in Hindi. Are you all convinced, or you want me to spend a little longer on this? I want all of your opinion, everybody. Are you convinced, or you want me to explain it a little more? Dear students, why are you all quiet? Are you boycotting me? No, sir. I am convinced. Okay. 3 more minutes. So Let's let's ask. talk about the same topic. Let's talk about the same topic. Okay. John Lennon had a very unhappy childhood. His father left home when he was only 5 years old, and his mother also refused to look after him, bring him up. So he lived with his aunt Mimi. Okay, now इतना सा हिस्से में कई past simple sentences हैं. I said John Lennon had an unhappy childhood. हिंदी करें. John Lennon का childhood बहुत unhappy था, right? His father left home when he was 5. उसके पिताजी ने घर छोड़ते थे नहीं ना बोलेंगे यहाँ पे, छोड़ नहीं, दिया. छोड़ दिए कॉन्टेक्स्ट थे। वैसे आपको क्लियर है ना कि यही बोलना है. लेफ्ट छोड़ V2 दिए। है, पास्ट सिंपल है. His father left home when he was only 5 and his mother also refused to bring him up. उसकी माँ ने भी कह दिया कि नहीं हम नहीं पालेंगे. Okay, his mother refused to bring him up. Okay, कर दिया. So he lived with his aunt Mimi. अब इसकी हिंदी क्या करेंगे? तो अपनी आंटी के साथ रहता था, राइट? इसलिए वो Yes, अपनी sir. आंटी के साथ रहता था. तो कोई दिक्कत नहीं है. पॉइंट मेरा यह है कि आपको जो हिंदी सूट करती है आप वही बोलते हो ना, बंधन नहीं है ना ये हिंदी वो हिंदी. पास्ट की बात है, जो कॉन्टेक्स्ट रहे वैसे. और पास्ट परफेक्ट में क्या होता है, पास्ट के पास्ट में जाना कंपलसरी है, आपका वो ऑब्लिगेशन. अगर नहीं है तो पास्ट परफेक्ट होएगा नहीं. पास्ट परफेक्ट तभी यूज करना है जब पास्ट के पास्ट में विजिट कर रहे हैं. अगर नहीं विजिट कर रहे पास्ट के पास, पास्ट परफेक्ट कभी मत सोचना, चाहे हिंदी कितना भी कन्विंस कर रहा हो तुम्हें. कभी कभी तुम्हें ऐसा बचपन की वजह से ऐसा आएगा, कुछ लोगों को था देख करके पास्ट परफेक्ट का फीलिंग आ जाता है. ठीक है बेटा, वो सब वर्ड्स पे नहीं ध्यान देना, हिंदी के शब्दों पे ध्यान देकर नहीं कर सकते तुम पास्ट परफेक्ट डिसाइड. हाउ विल यू डिसाइड? क्या वो पास्ट के पास्ट में ले जा रहा है? जब मैंने तुम्हें कहा आई नोटिस्ड और आई हैड नोटिस्ड, कौन सी हिंदी तुम्हें हेल्प कर सकती थी? कोई हिंदी नहीं यहाँ पे. बस तुम्हें ये देखना था कि मैं किस डायरेक्शन में देख रहा हूं. जब मैं जागा तो मैंने गौर किया. तो गौर किया जागने के बाद के जागने के पहले, बाद यानी पास्ट के पास्ट में नहीं गए, नोटिस करने के लिए पास्ट. जब नोटिस किया तो पाया कि कोई घर में घुसा था, राइट? तो somebody had, क्योंकि जो घुसा था वो कब हुआ? जागने के पहले. आई होप यू अंडरस्टूड. तो जब इस तरह से आपको पास्ट के पास्ट में जाने का मौका मिले तो पास्ट परफेक्ट यूज करना. बस इसी बात पे सोचना. ब्रेक में जाएंगे हम लोग तो, और कुछ मत सोचना कि पास्ट के पास्ट में देखेंगे तो पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे. और जो पहला पास्ट है वो पास्ट सिंपल होता है.